Welcome back to the channel of Chem Pacific. In this video, I'm going to discuss with you Spinels from the chapter Coordination Chemistry. So this is very important chapter. Before that, if you're new to our channel, don't forget to subscribe our channel and press the bell icon. And also if you like our video, do press the like button. Now let's get started. Now Spinels हम start करने से पहले बहुत अच्छे से समझ लेते हैं that Spinels का मतलब क्या है, वो कैसे बनते हैं. So Spinels जो है, it actually consists of cations and anions. Okay, तो Spinels जो है, it actually consists of cations and the anions. Anions may be in the form of sulfides or mostly in the form of oxides. Anions and the cations. So anions are mostly in the form of the oxides or sulfides like this. ठीक है, cations यहाँ पे दो होते हैं. एक है A जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्टली +2 होगा और दूसरा है B जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्टली +3 होता है. जो ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होता है वो दो रहते हैं पर स्पिनल्स और ये एक रहते हैं. कैसे, वो भी मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी. So obviously it is very much known to us that anions are the larger ions and cations are obviously the smaller ones. The anions जो है वो 3D dimension में in space they arrange themselves and they create some voids. These voids are two different types. One is tetrahedral void and another is octahedral void. Now, as because the cations are smaller in size as compared to the anions, they actually are present in these voids. तो पहले हम अच्छे से समझ लेते हैं ये voids कैसे बनते हैं. For example, 3-dimensionally अगर मैं सोचती हूँ ये first layer of the anions है. These are the bigger ones, bigger ions. ठीक है. So this is your first layer. This is the first layer of ions. This is your first layer. ठीक है. And इसके ऊपर, so this is going to be your second layer. I'm just denoting it as green in color. So this is going to be your second layer. ठीक है. Now see students, क्या होता है जब when they arrange space, they actually create some vacant spaces. ठीक है. And those vacant spaces are known as voids. So कभी-कभी ऐसा होता है कि first layer ने जो vacant space create किया है, second layer का जो ions है वो उसे cover up कर रहे हैं और second layer का जो vacant space created होता है वो नीचे का layer cover up करते हैं. तो देख रहे हो. So for example ये आपका first layer of void है. ठीक है. तो उसके ऊपर exactly उस डिप्रेशन में आपने second layer का anion को बिठा दिया. ये टाइप ऑफ कंडीशंस जब होता है तब इसे हम कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स. क्लियर. और अगर ऐसा होता है, अगर सेकेंड टाइप ऑफ कंडीशन, सो दिस इज योर फर्स्ट लेयर, आई एम डिनोटिंग विद द येलो कलर व्हिच इज इंडिकेटिंग द फर्स्ट लेयर एंड दिस इज योर सेकेंड लेयर. तो इसके ऊपर जब बिठाते हो कभी कभी ऐसा भी होता है दैट ऊपर और नीचे का जो वॉइड होता है वो मर्ज कोइंसाइड कर जाता है एक ही साथ. मतलब जस्ट नीचे का वॉइड के ऊपर ही ऊपर का वॉइड आता है. तो ये वॉइड काफी बिगर इन साइज है और इसे हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. सो अरेंजमेंट ऐसा होता है दैट जो ऑक्साइड्स है मतलब जो एनाइंस है, ठीक है, आपके पास है ऑक्साइड्स. ये दो टाइप ऑफ वॉइड क्रिएट करते हैं. एक है टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है, एक है टेट्राहेड्रल वॉइड और एक है ऑक्टाहेड्रल वॉइड. And if there are n number of the oxides, then there will be 12 number of the tetrahedral void and n number of the octahedral void. I hope this is clear to you, and I hope now it is also clear to you that octahedral का मतलब कैसा है और void का मतलब क्या है and tetrahedral void का मतलब क्या है. Now let's proceed. So पहले हम देखेंगे नॉर्मल स्पिनल्स, उसके बाद हम स्टडी करेंगे अबाउट द इनवर्स स्पिनल्स. ना नॉर्मल स्पिनल्स जो होता है दैट इज मोस्टली रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. A which is having the oxidation state of +2, B which is mostly having the oxidation state of +3, जो oxidation state higher that is double in number, and
is having O4. So this is how the normal spinels are represented. जो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है A2+, अगर इसका क्रिस्टल field stabilization is more in tetrahedral field as compared to the octahedral field, or rather जो mostly जो B है, अगर इसका crystal field stabilization in the octahedral field is more as compared to tetrahedral field, then it results in the formation of normal spinels. ना फर्स्ट जो चीज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि इसका फॉर्मूला AB2O4 कैसे बने, ठीक है. Why is it AB2O4? Now let's see. As I already discussed with you, what happens, the anions जो है, अगर वो n number of anions होंगे तो 2n number of आपका tetrahedral voids and n number of the octahedral voids होते हैं. And in the case of the normal spinels, what happens? In the case of the normal spinels, you will find out जो cation है, cation जो है उसमें दो टाइप होता है, एक A जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2, दूसरा है B जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3. अगर इस टाइप का कैटायन है जहाँ पे A2+ वो अगर 1/8 ऑफ द टेट्राहेड्रल साइट अगर कवर करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं, एंड B3+ अगर हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल साइट कवर करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं, देन इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द नॉर्मल स्पिनल. सो व्हाट डिड आई मेंशन यू? आई मेंशन यू दैट A जो है दिस इज ऑक्यूपाइंग 1/8 of the tetrahedral void, and B जो है A is having oxidation state of +2 and B which is having oxidation state of +3, this is occupying half of the octahedral voids. Clear? Now इसे अगर आप solve करोगे, step 1 है, step 2 में क्या कर रही हूँ, ये हो जाता है n/4 or this turns out to be n/2. If I multiply this whole with 4/n, then step number 3 you will get 1 into 4, ठीक है. This will turn out to be 1 and this will turn out to be 2. मतलब आप किसके साथ मल्टीप्लाई करो, सबको आप अगर 4/n से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसे and also this, सबको अगर आप 4/n से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, सो आपको ये मिलेंगे क्या मिल जाएंगे आपको ये मिलेंगे 4, ये मिलेंगे 1 and this is going to be 2. तो क्या आपको फॉर्मूला देखो, अभी आपको फॉर्मूला कितने अच्छे से मिल गया, ठीक है. तो क्या मिला आपको, A कितना है, दिस इज योर A है ना, दिस इज योर नंबर ऑफ B एंड दिस इज योर नंबर ऑफ ऑक्साइड आयंस. फॉर्मूला क्या हो गया, A, B कितना है, B2O4. क्लियर? सो दिस इज योर formula of a spinel. Normal spinels. And this is more appropriately represented like this. This is more appropriately represented like this. So देखो कितना interestingly हमने इसका formula भी derive कर लिया है. Now let's proceed. Now इनवर्स स्पिनल्स कैसे बनते हैं, देखो नॉर्मल स्पिनल का फॉर्मूला तो आपको समझ में आ गया. You are having the cations which actually occupy the voids created by the anions. Out of them you are having two cations. The cation if A2+ which is having the low oxidation state, it is occupying the tetrahedral voids, and B3+ which is of two numbers, it is occupying the octahedral voids and it is having the oxides.
it results in the formation of the normal spinels. Clear? Now see students, अगर इनवर्स स्पिनल्स क्या होता है तो उसके पहले हम जान लेते हैं नॉर्मल स्पिनल्स मोस्टली क्या होता है। अगर B जो है B3+, ध्यान से देखो B3+ का अगर ऑक्टाहेड्रल फील्ड में CFAC क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, ठीक है, is greater than the CFAC crystal field stabilization in tetrahedral field of B3+, then it is named as normal spinels. Exactly अगर इसका opposite हो जाता है, अगर exactly इसका inverse हो जाता है, that A2+ जो है A2+ का CFAC in octahedral field अगर ज़्यादा हो जाता है than the CFAC in tetrahedral field as compared to B, तब क्या होता है, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, तब half of B occupies the position that was actually previously occupied by A. तो B जो है, half of B जो है, ये क्या होता है, ये tetrahedral साइड में आ जाता है और A ऑक्टाहेड्रल साइड में आ जाता है, हाफ ऑफ बी। तो डेफिनेटली इसका फॉर्मूला क्या बन जाएंगे, इसका फॉर्मूला अभी बन जाएंगे B3+, it will now going to occupy the tetrahedral, then A2+, and half of B will always remain over here in the octahedral void, and this is going to occupy. So इस टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अगर वो अटेन करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे इनवर्स स्पिनल्स। I hope now you understand what do you mean by normal spinels, what do you mean by inverse spinels, and how and when it is formed. So ये हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अभी हमें जो क्लियर करना है वो ये है दैट हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है, हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं। सो सी यहाँ पे आई हैव ऑलरेडी गिवन यू, इफ इट्स अ नॉर्मल स्पिनल then it is represented in this way, clear, where X is denoting the anion and A and B, they are the cations which actually occupy the voids created by the anions. Now these voids are two types, octahedral and tetrahedral. Depending which cation is going to occupy which void as per the CFAC, then we name them as spinels, whether they are going to be normal or inverse. Clear? Now the normal spinels is represented like this. Why and how is it so? I already explained to you. And the inverse spinel is represented like this. So क्या हो जाता है, जब half of the B comes out and occupies the tetrahedral voids and A enters into the octahedral void, then it is known as inverse spinels. अच्छा, तो ये हमें समझ में आ गया। सो ध्यान से देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिए गए थे, ये CSIR-NET दिसंबर 2019, दिस इज CSIR-NET दिसंबर 2019 पार्ट सी का क्वेश्चन है। दे हैव गिवन यू टू स्पिनल्स, दिस एंड दे हैव इन्फॉर्म्ड यू दैट FeCr2O4 जो है ये है आपका व्हाट, दे हैव इन्फॉर्म्ड यू दिस इज the normal and the other is the inverse. Okay, so they have informed you that this ये है आपका normal. तो obviously अगर normal है इसे हम कैसे represent करेंगे, Fe, तो ये हो गया आपका 2+ and then you have the Cr, इसका ऑक्सीडेशन से 3+ होगा and ये ऑक्साइड हो जाएंगे O4. क्लियर? सो Fe2+ अगर ये नॉर्मल स्पिनल है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करेंगे और ये ऑक्टाहेड्रल। क्लियर? सो Fe2+ क्या ऑक्यूपाई करने वाला है, इट इज गोइंग टू ऑक्यूपाई द tetrahedral site. Clear to all of you? And they have also given you one more example. This is Ni
Ga2O4, and they are telling you that this is inverse spinel. क्लियर? अगर ये इनवर्स स्पिनल है तो फिर ये निकल हो गया, इसको ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो गया, ठीक है। ये गैलियम हो गया, इसको ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो गया, ठीक है। एंड दिस इज O4। तो इसे एज पर इनवर्स स्पिनल हम थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। अगर ऐसा है, इफ इट इज इनवर्स स्पिनल, हाउ इट इज गोइंग टू बी रीअरेंज? So that in this case, in the case of inverse spinel, the one with the higher oxidation state now will occupy with the tetrahedral side, half of it, and then the one with the lower oxidation state will occupy the octahedral side. Okay, so therefore we have concluded that ये अगर inverse है तो Ni2 plus is going to occupy the octahedral side. So आंसर क्या होगा? Fe2 plus, आंसर 2 हो जाएंगे बिकॉज Fe2 plus ऑक्यूपाई करेंगे टेट्राहेड्रल साइड एंड निकल 2 plus ऑक्यूपाई करेंगे ऑक्टाहेड्रल साइड। सो आंसर इज 2। देखो कितना इजीली हमने सॉल्व किया। दैट इज आल्सो 4 मार्क्स क्वेश्चन पार्ट सी। क्लियर? नाउ ये तो हम समझ में आ गया कि हाउ द हाउ द नॉर्मल स्पिनल्स एंड द इनवर्स स्पिनल्स आर रिप्रेजेंटेड। तो अभी हम कैलकुलेट करेंगे कि अगर आपको कोई स्पिनल दिए गया है तो उस स्पिनल को आप कैसे कैलकुलेट करोगे और इसे कंक्लूड कैसे करोगे, दैट वेदर इट इज नॉर्मल स्पिनल और इनवर्स स्पिनल। सो वन एग्जांपल आई हैव गिवन यू, दैट इज एक्चुअली आई हैव चोजन 2 examples over here. In my next video, upcoming video, I'm going to solve some more questions on spinels. So let's solve this. So अगर मैं इसे rearrange कर लेती हूँ तो ये हो जाएंगे Mn, which is having the oxidation state +2, and then you'll be having Mn2 with oxidation state +3, and then you have the O4. So this is containing 2. One with oxidation state +2 and the other with the oxidation state +3. So अभी हम क्या करेंगे, Mn2 plus जो है which is having electronic configuration of 3d5, Mn2 plus का जो है which is having the electronic configuration 3d5 and Mn3 plus which is having the electronic configuration 3d4. इन दोनों का CFS इन टेट्राहेड्रल फील्ड हम पहले कैलकुलेट करेंगे। Now always remember, I always also informed you in my previous videos as well, कभी भी अगर ऑक्टाहेड्रल फील्ड या टेट्राहेड्रल फील्ड अगर सिमेट्रिकली फिल्ड होता है, मतलब अगर वो हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड होता है तो उसका CFS हम जानते हैं क्या होगा, हमेशा 0 होगा। तो एक में कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ, बाकी में मैं डायरेक्ट 0 आई एम गोइंग टू पुट। तो सी, if it is tetrahedral, the lower one is going to be your E and the upper one is going to be your T2. Lower one E is going to have the energy of minus 0.6 delta T and the upper one is going to be of plus 0.4 delta T. And in this case, the same story, if it is D4, so it is going to be 1, 2, 3, 4. Why is it so? Because we know the tetrahedral complexes are all and always what? They're always high spin complexes, right? So इसके एनर्जी हो जाएंगे माइनस, ये है आपका E, ये है आपका T2. So again this energy is going to be 0.6 delta T and this energy is going to be plus 0.4 delta T. Now let's calculate the CFSE. So EG is containing of 2 electrons having energy minus 0.6 delta T and T2 is containing of 3 electrons which is having energy of plus 0.4 delta T. So this is equal to minus 1.2 delta T plus 1.2 delta T. ये कैंसिल आउट हो गया। एंड देखो मैंने हमेशा आप लोगों को कहा
और क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया. डू वॉच देम, दिस इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल टू यू. तो ये हो गया कि Mn2+ since this is half filled and symmetrically filled, so that is why इसका CFSE 0 है और हमेशा 0 ही होता है symmetrically filled जो कॉन्फ़िगरेशन है उसका CFSE. तो नेक्स्ट जो है अभी हम Mn3+, Mn3+ which is having D4 electronic configuration, Mn3+ which is having D4 electronic configuration, Eg is containing of 2 electrons with the energy minus 0.6 delta T. Clear? It has to be T because we are considering the tetrahedral field, plus it is having 2 electrons with energy plus 0.4 delta T. So this is going to be minus 1.2 delta T plus 0.8 delta T. So this will turn out to be minus 0.4 delta T. Now you have to convert this into delta 0 because while we need to compare, सबका unit same होना चाहिए. So we know that, what do we know? That delta T is equal to 4 by 9 of delta 0. So this will turn out to be 0.4 into 4 by 9 of delta 0. So if you calculate this, it will turn out to be minus 0.18 delta 0. Clear? तो हमने CFSE Mn2+ and Mn3+ दोनों का in the tetrahedral field calculate किया है. Now let us calculate the CFSE of both Mn2+ and Mn3+ in octahedral field. ठीक है? Now Mn2+ we know that it is having electron configuration of 3d5. So and Mn3+ is having electronic configuration of 3d4. अभी ये हो गया आपका octahedral field. So as I already informed you that octahedral field या tetrahedral field अगर symmetrically filled होते हैं then इसका CFSE हमेशा क्या होगा? इसका CFSE हमेशा 0 ही होगा. Once one I have done for you and you can solve it on your own, you will be getting it 0 only. I am not elaborating over here. लेकिन अगर इसका ये टेट्राहेड्रल फील्ड है, थोड़ा सा इसे लिख लेते हैं. दिस इज योर T2G, दिस इज योर EG and it is 1, 2, 3 and 4. So T2AG is having energy of minus 0.4 delta 0 and EG is having energy of plus 0.6 of delta 0. Now let's calculate his CFSE. Now, so for the CFSE will turn out to be CFSE. So it is T2G is consisting how many electrons? 3. 3 into minus 0.4 delta 0 plus 1 into 0.6 delta 0. So this is equal to minus 1.2 delta 0 plus 0.6 delta 0. So this will turn out to be minus 0.6 delta 0. ठीक है, तो नाउ हम अभी कंक्लूड करेंगे, कंक्लूजन पार्ट अभी स्टार्ट होगा. सो Mn2+ जो है अभी हमने देखा है, Mn2+ का कंपैरिजन का कुछ है ही नहीं. इसका बोथ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल फील्ड में दोनों ही 0 है. ठीक है, एंड Mn3+ सिंस हम हाई स्पिन इसलिए ले रहे बिकॉज ऑक्साइड इज अ वीक फील्ड लिगैंड. Mn3+ का हमने कैलकुलेट किया है, टेट्राहेड्रल फील्ड में इसका जो एनर्जी था वो है माइनस 0.18 डेल्टा 0 एंड ऑक्टाहेड्रल फील्ड में इसका जो था वो है माइनस 0.6 डेल्टा 0. नाउ इट इज क्लियरली विजिबल टू यू. नाउ ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, Mn3+ जो है, the negative sign is indicating that it is stabilized and the stabilization energy in the octahedral field of Mn3+ क्या हो गया? is greater. So we got that the stabilization energy of the crystal field stabilization energy in the octahedral field is greater. So CFSE of Mn3+ in the octahedral field is greater than the CFSE of Mn3+ in the tetrahedral field. इसका मतलब ये हो गया that Mn3+ जो है it will occupy what?
it is definitely going to occupy the octahedral void. So Mn3 plus will occupy the octahedral void. So remaining Mn2 क्या हो जाएंगे? Mn2 will occupy the tetrahedral void and in the oxide spinels. तो इस type of condition जब होता है, जब the one with this plus 3 oxidation state, it occupies the octahedral void and the formula will turn out to be like this, then it will be named as normal spinel. Now this is, I hope this is clear to all of you. So कभी भी ऐसा है that Mn3 plus जो है, in this case हमने देखा that Mn3 plus का octahedral site में CFSE जो है ये ज़्यादा है as compared to the tetrahedral site. ठीक है? So it is, so in this case we conclude that Mn3O4 is a normal spinel. Now let us move on to the next one. Fe3O4. So Fe3O4 को हम फिर से rearrange कर लेते हैं बहुत अच्छे से. You know that it is 3 है metal, so एक 2 plus oxidation state में रहेगा, एक 3 plus, जो 3 plus होता है वो double हो जाता है. कैसे फॉर्मूला डिराइव है मैंने आप लोगों को दिखाया. नाउ यहाँ पे आप देखो टेट्राहेड्रल फील्ड जो है, तो यहाँ पे अगर हम टेट्राहेड्रल फील्ड करेंगे ना, Fe3 प्लस जो है, ठीक है, Fe3 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएंगे 3d5. सिंस इट इज 3d5, तो फिर इसका CFSE आई एम नॉट कैलकुलेटिंग अगेन एंड अगेन. वी नो दैट इसका CFSE क्या हो जाएंगे, इसका CFSE हो जाएंगे 0. क्लियर? एंड देन अगर ये Fe2 प्लस है 3d6 हो जाएंगे. सो फिर हम कैलकुलेट कर रहे टेट्राहेड्रल फील्ड में. तो टेट्राहेड्रल फील्ड अगर होगा तो इसका हो जाएंगे -0.6 डेल्टा T और इसका हो जाएंगे प्लस 0.4 डेल्टा T. तो ये हो गया है आपका E, ये हो गया है आपका T2. सो अभी फिल अप करते हैं. 1 2 3 4 5 6. ठीक है, it has to be high spin because we know the tetrahedral complex has to be high spin. Now let us calculate the CFSE. C. So CFSE कैसे calculate करेंगे? So CFSE is equal to T2 is containing of 3 electrons with the energy of -0.6 delta T and it is containing of 3 electrons with the energy of plus 0.4 delta T. ठीक है, तो if you calculate this, it will turn out to be -1.8 delta T plus 1.2 delta T. Which is going to be -0.6 delta T. And since we know that delta T is equal to 4/9 of delta 0, so we have to convert it into delta 0 and the answer you are going to find, it will be -2.7 delta 0. Clear? So this I have calculated in the tetrahedral field दोनों का. इसके बाद हम क्या करेंगे, हम octahedral field में करेंगे. Again since Fe3 plus is d5, तो ये भी कोई भी d5 मतलब ये सिमेट्रिकली फिल्ड हो जाते हैं, तो फिर ये हो जाएंगे इसका CFSE 0. तो आई एम नॉट डूइंग एलाबोरेटिंग इट एंड इसका कर लेते हैं. सो Fe2 प्लस जो है ये हो गया आपका d6, तो इसका CFSE क्या होगा 1 2 3 4 5 6. तो अभी ये ऑक्टाहेड्रल है तो ये T2G है, ये हो जाएंगे आपका EG. तो इसका जो वैल्यू है ये है -0.4 डेल्टा 0 और इसका जो वैल्यू है ये हो जाएंगे प्लस 0.6 डेल्टा 0. सो लेट्स कैलकुलेट इट्स CFSE. Its CFSE is equal to 4 into -0.4 delta 0 plus 2 into 0.6 delta 0.
which is equal to minus 1.6 delta 0 plus 1.2 delta 0. So this is equal to आपको आ जाएंगे minus 0.4 delta 0. So now the conclusion part, we have already concluded that Fe3 plus का दोनों ही केस में, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल केस में Fe3 plus का जो CFSE है ये 0 है, तो इसे कंपेरिजन का कुछ है नहीं. व्हाट वी हैव इज नाउ Fe2 plus का टेट्राहेड्रल फील्ड जो है इसका जो आया था हमने कैलकुलेट किए थे 0.27 डेल्टा 0 एंड ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जो हमने कैलकुलेट किए थे विच इज माइनस 0.4 डेल्टा 0. नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट इज अभी जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, सो बोथ ऑफ देम आर स्टेबिलाइज्ड एंड द स्टेबिलाइजेशन एनर्जी CFSE, crystal stabilization energy of Fe2 plus now in this case is more in the octahedral field as compared to the tetrahedral field, right? So what will happen now? Fe2 plus will occupy the tetrahedral field. ठीक है, तो फॉर्मूला ये हो जाएगा. This will occupy the octahedral field. ठीक है, and half of it will come outside. Half of Fe3 plus will come outside. ये type of configuration. So since we have seen that in this case that if CFSE of Fe2 plus, CFSE of Fe2 plus in the octahedral field is greater than the CFSE of Fe3 plus in the tetrahedral field. Therefore, Fe2 plus will now occupy the octahedral site. In this case, फिर ये क्या हो जाएंगे? Then we can conclude that Fe3O4 is therefore what? Is therefore an inverse spinel. I hope this is clear to you. Now let's end the video over here. Thank you for watching our video.